हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 इंग्लिश चैनल। आज हम चाय पीते पीते रेन से रिलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए मेन चीज है प्रैक्टिस, और खुद की स्टोरी टेलिंग से आप बहुत अच्छे से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आप इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं बालकनी में कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा हूं। I am sitting on a chair in the balcony and having tea. ठंडी हवा चल रही है। Cold breeze is blowing. एक कबूतर अपने पंखों को फुलाकर बैठा है जैसे कि उसको ठंड लग रही हो। A pigeon is sitting with by inflating its wings as if it is feeling cold. लेकिन वास्तव में ठंड है क्योंकि मैंने जैकेट भी पहनी हुई है। But it's really cold because I'm wearing a jacket too. आसपास के पेड़ तेज हवा के कारण झुके जा रहे हैं। The surrounding trees are bending due to the strong wind. कई दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही है। It has been bucketing down for several days. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अब केवल इंग्लिश रिवाइज करते हैं। वीडियो पॉज करके आप खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। I am sitting on a chair in the balcony and having tea. Cold breeze is blowing. A pigeon is sitting with by inflating its wings as if it is feeling cold. But it's really cold because I'm wearing a jacket too. The surrounding trees are bending due to the strong wind. It has been bucketing down for several days. आसमान में बादल छाए हुए हैं। The sky is overcast. बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। Clouds are thundering and lightning is flashing. कल रात तो तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे थे। Last night there was bucketing down along with hailstones. अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। It is still drizzling. जिससे ना तो मैं ऑफिस जा पा रहा हूं और ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। Due to which neither I am able to go to office nor my children are able to go to school. बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। The rain has created a flood-like situation. Students, let's revise English sentences. The sky is overcast. Clouds are thundering and lightning is flashing. Last night, there was bucketing down along with hailstones. It is still drizzling. Due to which neither I am able to go to office nor my children are able to go to school. The rain has created a flood-like situation. बारिश आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। The rain is not stopping even today. न्यूज़ में आया है कि अभी अगले 4-5 दिनों तक बारिश के रुकने के कोई आसार नहीं है। It has come in the news that there is no chance of rain stopping for the next 4-5 days.
बारिश की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। Everything has gone chaotic due to rain. घरों की छत और दीवारों में सीलन आ गई है। There is dampness in the roofs and walls of the houses. बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। Clothes are not drying due to rain. Students, let's revise English sentences. The rain is not stopping, even today. It has come in the news that there is no chance of rain stopping for the next 4-5 days. Everything has gone chaotic due to rain. There is dampness in the roofs and walls of the houses. Clothes are not drying due to rain. पूरे घर में खिड़की पर, दरवाजों पर और तो और साइकिल और बाइक के हैंडल पर जिधर देखो कपड़े लटके पड़े हैं। There are clothes hanging everywhere, in the house, on windows, doors and even on the handles of bicycles and bikes. और एक चीज की कमी थी, लाइट भी चली गई है। And one thing was missing, the electricity had also gone out. बच्चे बाहर भी नहीं खेल पा रहे हैं, पूरा दिन घर में उधम मचाकर रखते हैं। Children are not even able to play outside, they spend the whole day fussing at home. लेकिन बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। But due to rain, the weather has become awesome. Students, let's revise English sentences. There are clothes hanging everywhere, in the house, on windows, doors and even on the handles of bicycles and bikes. And one thing was missing, the electricity had also gone out. Children are not even able to play outside, they spend the whole day fussing at home. But due to rain, the weather has become awesome. हमें गर्मी और उमस से राहत मिली है। We have got relief from heat and humidity. कल शाम कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी। The rain had stopped for some time yesterday evening. तो मैं कुछ सामान लेने बाहर गया था। So I went out to get some things. सड़कों पर पानी जमा था और कहीं-कहीं पर कीचड़ था। There was water logging on roads and at some places there was mud. जिसके कारण चलना भी मुश्किल हो रहा था। Due to which even walking was becoming difficult. Students, let's revise English sentences. We have got relief from heat and humidity. The rain had stopped for some time yesterday evening. So I went out to get some things. There was water logging on roads, and at some places there was mud. Due to which even walking was becoming difficult. मैं बाहर पैदल ही गया था और फिसलन इतनी ज्यादा थी कि मुझे चप्पलों को हाथ में उठाना पड़ा। I went out on foot, and it was so slippery that I had to carry the slippers in my hand. बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा। With great difficulty, I reached home. घर पहुंचते हुए फिर से बारिश शुरू हो गई थी।
By the time reached home, it had started raining again. जिसके कारण मैं पूरा गीला हो गया था. Due to which I had drenched. Students, let's revise English sentences. I went out on foot, and it was so slippery that I had to carry the slippers in my hand. With great difficulty, I reached home. By the time reached home, it had started raining again. Due to which I had drenched. आप भी ऐसे ही चलते चलते बहुत आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं. वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें. कीप प्रैक्टिस.